Assalamu alaikum and welcome back to the Primavera tutorial series. In this tutorial, which is number 13th tutorial, we are going to discuss about the how to enter the activities progress, and we have to see how to update your project's progress. We have to discuss certain things. हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है इसके अंदर, जिसमें से एक ये है कि अगर आपने आपकी साइट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया और आपने देखना है कि जी आपने जो एक्टिविटी प्लान की थी, जो आपने स्केजुअल प्लान किया था, वो आपका जो प्रोजेक्ट है अगर उससे पहले आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो अब आपका प्रोजेक्ट कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा या उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी प्लानिंग के ऊपर और क्या नहीं. सो वी हैव टू सी वेदर if you have completed one activity, how much time it takes, and if it is completing in lesser time as planned, then what is the effect on your entire project's duration. So इसको डिले किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज का ट्यूटोरियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in the previous tutorial I discussed about the baselines के baselines क्या होती हैं and how to enter a baseline, how to check whether your project is following your baseline or not. वो if you have not seen that, you can go through the tutorial number 12. And in this tutorial I'm going to start with this blue line कि जी ये blue line क्या है. This blue line is the indication of your project start. If you want to see, if you want to, let's say, track the activities, that how much activities are coming in this time and how much activities are coming in this time, I'm going to zoom out that first of all, and now I'm going to just click on this spotlight option, progress spotlight. As soon as I click here, you can see this yellow highlighted column appeared, which you can drag easily, and this is just for the purpose of highlighting. As the name tells you, it says progress spotlight. So if you want to see how much activities are coming in this yellow bar, इसको आप drag करेंगे और देखेंगे कि कितनी activities इसके अंदर आ रही हैं. When you have a bigger project, a large project, in there you have lots of activities, hundreds of thousands of activities, then it becomes very difficult to see which activity is coming here and which activity is not. So then it becomes useful. तब इसका फ़ायदा होता है, आप इसको ऐसे ड्रैग करके चेक करते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त कितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, हाउ मैनी एक्टिविटीज़ कम हेयर, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विल बी हाईलाइटेड. इट बिकम ईजियर फॉर यू टू सी एंड सेलेक्ट कि जी कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे आ रही है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ दिस प्रोग्रेस स्पॉटलाइट फीचर. आई एम गोइंग टू अनचेक दैट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट इफ़ यू वांट टू चेक योर प्रोजेक्ट्स progress or your project schedule by selecting a specific date, that for example your project is not started on the 1st of October, which is the by default date of the start of this project. Let's say it starts on 10th of October and you want to see that if you delay 10 days, when is your project going to finish and how much it is going to delay. So for that you have to click on schedule, and from here you can select the any date of the month of the year at which you can see कि जी आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करें और वो कब डिले होगा. लेट्स से फर्स्ट की बजाय मैं 10th of October सेलेक्ट करता हूँ. गोइंग टू क्लिक ऑन स्केड्यूल एंड यू कैन सी ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर गोइंग अवे फ्रॉम द लाइन, एंड यू कैन ईजिली सी कि जी कब ख़त्म हो रही हैं. जाके आप उसकी डेट देख सकते हैं इसको एक्सटेंड करने के बाद. दिस ब्लू कलर लाइन व्हाट इट इज़, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. हम देखेंगे कि ये ब्लू कलर लाइन का क्या मतलब है और इसको क्या करना है. आप एज यू कैन सी स्केजुअल परसेंटेज कंप्लीट 100%, 100%, 100%. ये आपने कैसे ऐड करना है और इसके साथ हमने कैसे प्ले करना है. सो आई एम गोइंग टू select that 1st October again, click on schedule, it comes back to its original position. Now I'm going to click on the first activity, which is preliminary survey. I'm going to, since our title of discussion of today's tutorial is the how to enter the activities progress, आप साइट पे गए, साइट पे आपने काम स्टार्ट किया. साइट पे काम स्टार्ट होने के बाद आपने प्राइमावेरा में ये एंटर करना है कि जी आज हमारा इतना % काम हो चुका है, या हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे आज था वो कंप्लीट हो चुका है, या 50% हो चुका है. जो भी एक्टिविटी आपकी, विच एवर एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डे, लेट्स से इट इज़ फिनिश्ड एंड हाउ मच इट इज़ फिनिश्ड, up to which % it is finished, we are going to learn how to enter that today. So select the activity. First of all आपने उस एक्टिविटी को select करना है जिसकी आपने प्रोग्रेस देनी है कि जी एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है या नहीं. तो देन यू हैव टू go to this bar which can be opened from this show hide button, show hide bottom layout. You have to click here. As soon as you are going to click here, you have to go to this status option. When you are going to enable this status option, you can easily see this option of started, finished, duration, percentage. Now आप लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं कि जी हमारी एक एक्टिविटी 50% कंप्लीट हो गई है या 20% कंप्लीट हो गई है. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल टाइम,
how much time it was given. Like it was originally given 0 0.5 hours or 0 0.5 days, whatever the units are, and you can add here the remaining time. You can play with them as well. You can add the percentage, or you can add this here time as well. So let us say first we have to click on that started checkbox. We are going to tell this software that this activity has been started and how much it has been completed today. Let's say it is 60% completed. Now you see this length of this bar. As soon as I'm going to click enter, you can say it has become half. Now why it has become half? This is the original baseline when we which we added in the previous tutorial. आपने देखा था कि हमने baseline add की थी अपने पिछले tutorial के अंदर. तो it was supposed to be finished on this time. इस टाइम पे इसने फिनिश होना था, लेकिन वो पहले ख़त्म हो गई है. 60% वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है. तो इससे क्या फ़ायदा होगा जी? What is the benefit which we are going to get if this activity is 60% already completed? That we can see by clicking on this schedule button. Let's say I'm going to click here schedule, and you can see all the activities have been shifted backwards, which is an indication that your project is going to complete before time. So in this way you can add the project's progress of every activity. आप हर activity की जितनी भी percentage complete हो चुकी है वो आप डाल सकते हैं. I personally use this percentage option. You can use this remaining time option as well. अगर आपने उसको add करना है कि जी duration का 0.5 टाइम था, उसका 0.25 हो चुका है. अब यहाँ पे 0.25 ऐड कर देंगे. 0.25 जैसे ही मैं ऐड करता हूँ आप देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हाफ हो गया. हेयर एज वेल अगर आपने इसकी परसेंटेज के साथ प्ले करना है तो आप 50% करके पहले इसने आपने इसको स्टार्टेड पे क्लिक करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन 50%. जैसे ही 50% पे क्लिक किया अगेन आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया. रिमेनिंग को 0.1 कर दिया उसने. मैं इसको अगेन 0.5 करता हूँ अगर, तो ये परसेंटेज 0 हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये सारा काम हो चुका है. ओरिजिनल भी 0.5 ही थी, तो मैं 0.5 एंटर करने लगा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज़ द वे यू कैन प्ले विद द एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन. जितना जितना काम आपका साइट पे होता जाए आप उसकी प्रोग्रेस हर एक्टिविटी को सिलेक्ट करके स्टेटस में जाके उसकी परसेंटेज को आप दे सकते हैं. लेट्स से आपका टोटल प्रोजेक्ट का 50% काम आज हो गया या 10% काम आज हो गया, तो आप उसको 10% करके, तो अगर प्रोजेक्ट को आपने चेक करना है कि जी लेट्स से कि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ. मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ. आई एम गोइंग टू जूम दैट फॉर यू. एंड दी let's say this activity is preliminary survey. I'm going to click here and I'm going to click started. Yes, it is started. I'm going to click here 50%. Let's say 50% is the work which has been completed. Going to click enter here. You can see it goes back, and now I'm going to check the schedule on the 2nd of October. You can see this blue color just moved from first to the second, and this blue color is an indication कि जी ये वर्क हो चुका है, ये काम हो चुका है. ये आपको बता रहा है कि दिस इज़ डन. आप देख सकते हैं कि जी आपका प्रोजेक्ट कितना डिले हो रहा है अब उसकी वजह से. तो लेट्स से आई एम गोइंग टू क्लिक दैट बैक टू 1, select schedule, and now it goes back easily. And you can say that it was, this activity has been shifted. All of the activities have been shifted from this point to this point because this activity was supposed to be finished on up to this time, but it is finishing earlier. So this is the way you can give the activities progress at any time of the project, and you can schedule that by selecting any of the date. आप किसी भी डेट के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी किस टाइम के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं अब आपका प्रोजेक्ट अब कितनी जल्दी आ गया या अब कितनी डिले हो गया. हाउ मच योर प्रोजेक्ट इज़ डिलेइंग एंड हाउ मच इट इज़ फिनिशिंग बिफोर टाइम. सो दिस वाज जस्ट फॉर द एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स. कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.